First of all, you have to understand the writing topic. Number one, they give you a task which is brief. They give you a table or pie chart. उसमें स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती है, जिस तरह आप अपनी इकोनॉमिक्स की बुक में, मार्केटिंग की बुक में कोई टेबल देखते हैं, कोई पाई चार्ट, ग्राफ वगैरह, उसकी इंटरप्रिटेशन करनी होती है। उसमें फैक्ट्स और नंबर्स होते हैं, पॉपुलेशन बताई होगी, सेल्स बताई होगी किसी कंपनी की, और उसके बाद आपसे ये कहा जाता है कि प्लीज इंटरप्रेट दिस इंफॉर्मेशन। जैसे मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर आपको रीड करके बताऊं, तो व्हाट दे आर सेइंग इज समराइज दिस इंफॉर्मेशन by selecting and reporting the main features and make comparisons wherever relevant. So main features you have to report, जो उसके अंदर नंबर्स बताए होंगे, चाहे 4 पाई चार्ट दिए हो, चाहे एक ग्राफ दिया हो, चाहे बार चार्ट दिया हो, चाहे मैप दिया हो, उसके मेन फीचर जो होंगे वो उसकी बॉर्डर लाइन पे होंगे, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दो लाइनों के साथ जो इन्फॉर्मेशन दी होगी वो मोस्टली मेजर इन्फॉर्मेशन होती है। और उसके अंदर फिर उसके बारे में बताया होता है किसकी सेल्स कितनी बढ़ गई, कौन सी चीज़ कम होगी, तो उसको समझना है। उस टास्क को हम अभी अटैम्प्ट नहीं कर रहे, वी विल गो ऑन इट आफ्टर फ्यू डेज। अभी हम दूसरा टास्क कर रहे हैं। इस टास्क के अंदर आपको 150 वर्ड्स में रिस्पॉन्स देना होता है, यानी कि अराउंड अबाउट 3 पैराग्राफ्स और अ लिटिल मोर देन 1 पेज। टोटल टाइम जो आपके पास राइटिंग असाइनमेंट के लिए है ना, वो आपके पास होता है 1 आवर का। इसमें 20 मिनट्स वो सजेस्ट करते हैं कि आप फर्स्ट टास्क को दें, 40 मिनट्स सेकंड टास्क को दें। अब फर्स्ट टास्क को नॉर्मली 20 मिनट्स में एक्सपर्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट्स उसको भी 25 मिनट 30 मिनट ही लगा लेते हैं। और सेकंड टास्क को जब करना शुरू करते हैं तो टाइम गेटिंग ओवर। द टिप हियर इज डोंट लुक एट द फर्स्ट टास्क, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द सेकंड टास्क and read the topic. When you will read it, your subconscious will start working on it. उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका टॉपिक जो है वो बुक्स के बारे में है, फिल्म टेलीविजन के बारे में है, स्कूल एजुकेशन के बारे में है, लाइब्रेरीज के बारे में है, या कोई कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में है, कोई हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है। आपका माइंड उस पर काम शुरू कर देगा। उसके लिए ये 40 मिनट्स देते हैं। I ask the students to keep 10 minutes for the outline. Outline के बगैर दुनिया का कोई भी राइटर अच्छा काम नहीं कर सकता। पहले आपने आउटलाइन बनानी है, चाहे आपने एक ऐसे लिखना है, एक बुक का चैप्टर लिखना है, पूरी बुक लिखनी है। You need to have a draft, a rough sketch in front of you that what are you going to write about, what examples you will include in it, what facts you can provide here, and how you will end it. So first you will develop an outline. Paragraph 1, paragraph 2, 3, 4. A good essay should have 5 paragraphs. Normally you don't have time to write 5 paragraphs. When you are on the 4th paragraph, the time is almost finished or it's about to finish in the real test. If you have not practiced well, if you have not planned well. So 10 minutes for the outline. और जो थिंकिंग करनी है, जो सोचना है, वो आउटलाइन के टाइम में सोचना है। ये नहीं कि पहले बैठ के सोचते रहे फिर आउटलाइन बनाते, नहीं। 10 मिनट में आउटलाइन बनाए फिर ऐसे लिखना शुरू करते हैं। Whenever you will see the topic, read the topic at least 3 times before thinking something, ताकि आपको उसके कीवर्ड्स पता लग जाए। कीवर्ड्स को अगर आप कंप्यूटर बेस्ड कर रहे हैं तो उसमें तो ये ऑप्शन नहीं होगी। अगर पेपर बेस्ड है उसमें आप अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन आपके ज़हन में भी बैठ जाते हैं कीवर्ड्स। अब हर टॉपिक में जो पहला स्टेटमेंट होता है ना, पहला जुमला, वो एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है। जो करने का टास्क होता है वो टॉपिक के 3rd सेंटेंस में होता है। Most of the topics consist of 3 sentences. In the first paragraph, they will give a general statement. For example, creative artists should always be given freedom to express their own ideas. Creative artists को फिर उन्होंने define किया है कि words, pictures, music और film, in whichever they wish. ये अब second sentence हो गया। So there is no full stop, there is no separation, there is no comma, there is no pause. उसी सेंटेंस का हिस्सा, लेकिन एक सेंटेंस में 2 बातें वो कर रहा है। एक बात ये कर रहा है कि क्रिएटिव आर्टिस्ट को फ्रीडम होनी चाहिए। दूसरी बात ये कर रहा है क्रिएटिव आर्टिस्ट कौन कौन से होते हैं या उनकी क्या टाइप्स है। तीसरी बात कर रहा है इन whichever way they wish, किसी भी तरीके से वो अपने जज्बात का, अपने फन का इज़हार करना चाहिए। इसमें क्रिएटिव आर्टिस्ट आपका कीवर्ड होगा, उसकी टाइप्स कीवर्ड होगी। इन सब टाइप्स को आपने एड्रेस करना है अपने एसे में।
और फिर फ्रीडम टू एक्सप्रेस, कि वो फ्रीडम आज़ादी और एक्सप्रेस करने की इजाज़त करनी है। और लास्ट सेंटेंस में वो कह रहा है देयर शुड बी नो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस ऑन व्हाट दे डू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस। और उसमें उन्होंने कहा नो, देयर शुड बी नो, नहीं होनी चाहिए। टू व्हाट एक्सटेंट यू अग्री और डिसएग्री विद द ओपिनियन, कि किसी की ओपिनियन है, आप इससे एग्री करते हैं या नहीं, किस हद तक। In the very first paragraph, when you open your essay, and even before that, when you're developing your outline, you should say that you agree with this or you disagree with this. You have to take a side very early in the outline, and then develop your thoughts and your ideas according to that. So you have to take one side, you agree with it or you disagree with it, and then develop your ideas and your thoughts according to that. Second thing they say, in every essay, give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. So it's not important or necessary or required that you are working in an office or you have a job experience. You can have your personal experiences which are relevant to the topic and you can mention those. So you have to think that which personal experience is relevant. And if you couldn't find any relevant experience, create one. It is a test of English, not a test of your personal life. जैसा मैं कहता हूँ कि इसके अंदर जरूरी नहीं कि आप हर बात सच लिखें, लिखें जरूर जो वो पूछ रहा है और अंग्रेजी में लिखें, that's it. So you have to support your answer with examples and logics. Logic किसी भी चीज़ की reason वो आपने जरूर provide करनी है. For example, you are saying that if you are saying that films are not good, then why you are saying so? Films are not good because they create a bad impact on your health, your vision, and you are sitting there for a long time and you are wasting time. You are not able to do anything, and the things which you see in the movies which are not appropriate for certain people, like crimes or vulgarity or abusive language or use of weapons. If an underage child is watching these things, he or she will think negative things, and such things will promote negativity. So if we look at this topic and we segregate this in different pieces, the first thing, you should take one side, that you disagree with it or you agree with it. And they are saying that there should be no government restrictions, but you disagree. You think there should be government restrictions, as we discussed earlier. Why there should be government restrictions? Because then the creative artists create certain things. In first paragraph, we will talk about the painting, the caricatures of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which were developed, which were made by some painter in France, Europe, and millions of people around the world, their emotions were hurt, and they raised a protest and demonstration in their countries, and finally someone attacked that person or killed that person. So it is like playing with the emotions of people. If there would be laws in France, like they have laws for Holocaust in Germany, Belgium, Netherlands, France, Switzerland, Europe, UK, Ireland, US, etc. Name all these countries, and then in that write and many other countries, because you have to complete your word count. तो आप उसमें बताएं कि हॉलोकॉस्ट जो है, जिसके अंदर जूस को जब मारा था हिटलर ने, उसके बारे में बात नहीं की जा सकती, तो फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून्स बनाने की किसी को क्यों इजाजत दी जा सकती है? इसके बारे में लॉज नहीं बना सकते वो? There is sufficient number of Muslims living in Europe and European countries. They can make laws so that no one's emotions will get hurt. Because इस तरह के art से, such art promotes hate, speech, and differences among people. Art is about connecting people. Art is about promoting love. Art is about promoting humanity, the goodness in people, the positivity, not about hurting someone or hate speech. Then you can talk about the writer Salman Rushdie. He wrote satanic verses which hurt the emotions of hundreds and thousands and millions of Muslims around the world. And then Iran banned that book and imposed a fatwa on him. Mention that Salman Rushdie and his book Satanic Verses. One country banned it, then other countries followed that tradition. The book is banned in Pakistan and Bangladesh and in many other Islamic countries, because it is not an expression of art. It is an expression of hate speech, conflict, promoting difference, disgracing and disrespecting those people who are prophets. So art should be in accordance with the civilization, the traditions, the history, culture and religion of a specific country. And it is the role of the government to
make laws and make regulations for the betterment of a large number of people, keeping in mind the tradition and history and culture of the society. If the government will not make any laws to control the creative art, then hate speech, vulgarity, then differences among people and negativity and crimes will spread in the name of art. For example, in movies, now connected with the movies, like in many Hollywood and Bollywood movies, they show crimes like murder and use of weapons and rape and assault and fighting, which is inappropriate for everyone to see. You cannot watch those things in the family because it's a human nature. Studies on psychology and human behavior shows that what type of behavior a person sees, he or she will adopt or follow that behavior. So, in order to fix the behavior, the government should make those laws which will control the art in some form and shape. A person in Netherlands, he wrote ayats and verses of Quran Pak on a women's body, and they named it as art and made a short film on that. Then someone killed him afterwards. So this is not an art. There is body art in different countries. They paint the bodies. This is just promoting evil and satanic behaviors among people. This is not the maqam or position of humanity and mankind. So government is the torch bearer for the whole people. Government is responsible for its population's sound physical and mental health and behavior. Government should make laws which will create a healthy society, not a sick society. So the role of government is very clear that it should impose restriction on creative art, that what type of art is allowed, what type of art is not allowed, so that we remains human, so that we remains dignified and respectable, and nobody can make fun of the holy books and prophets and global leaders. And this should be your conclusion in the last paragraph, that I have given the example of painters and writers and films who are an expression of creative art, but they are also hurting the millions of people, their emotions and their health, and not suitable for children or families. So there should be government laws on it. तो आपका ऐसे कंप्लीट होगा. इस तरह से आप एक टॉपिक को एड्रेस करते हैं. My effort in all the topic is to provide you with the content as well. क्योंकि स्टूडेंट जब लिखते हैं तो उसके अंदर कंटेंट की एक वैरायटी और एक उसके अंदर प्रेजेंस हो एग्जांपल्स के साथ, तो जो एग्जामिनर है वो इम्प्रेस होता है और फिर आपकी ग्रामेटिकल एरर्स भी कंपैरेटिवली कम होते हैं क्योंकि आपके पास मवाद होता है लिखने के लिए, आपको बार बार सोचने के लिए लिखना पड़ता है. तो जो मैं 10-15 एसेस की बात कर रहा हूँ, आई ट्राई टू ब्रीफ यू ऑन ऑल दोस टॉपिक्स विद एग्जांपल्स एंड थिंग्स लाइक दैट. ओके, सो लेट्स सी हाउ यू हैव done the work so far. टीचिंग जो है ना वो किसी का प्रोफेशन होती है. कोई हालात की वजह से टीचर बन जाता है, कोई दोस्त किसी को कहते हैं कि तुम आजकल तुमने इंजीनियरिंग किया तो जॉब नहीं मिल रही, टीचिंग स्टार्ट कर दो. कि फैमिली के हालात ऐसे होते हैं कि खातून कोई अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए या फैमिली को सपोर्ट करने के लिए टीचिंग स्टार्ट कर देती है. लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बाय चॉइस टीचिंग को ऑप्ट करते हैं. आई एम अ टीचर बाय चॉइस. मैं बहुत छोटा था, ये अनम जितना था जब से मुझे पता था कि मैंने टीचर ही नहीं बनना है, टीचिंग नहीं जाना है, टीचर ही बनना है, एजुकेशनल मैनेजमेंट ही करनी है. बिकॉज आई सॉ माई पेरेंट्स दे यूज्ड टू मैनेज अ स्कूल सिस्टम. मैंने बचपन से देखा. तो एजुकेशन इज़ माई पैशन, इट्स नॉट प्रोफेशन फॉर मी, इट्स पैशन फॉर मी. किसी को पढ़ा के मुझे अच्छा लगता है.